पूजा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू डू अ हॉल ऑन माई चैनल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई एम लाइक अ होल्डर, तो मैं बहुत सारा सामान खरीदती रहती हूँ बट मेरे को नहीं लगा था कि मैं कभी भी यूट्यूब पे दिखाऊंगी ये सब चीजें कि मैं क्या खरीदती हूँ बिकॉज आई एम नो एक्सपर्ट. आई जस्ट बाय थिंग्स जो मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ या फिर जो मुझे जेन्युइनली नीड होती है या पसंद आ जाते हैं. तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू शो यू थिंग्स दैट आई रिसेंटली बॉट. तो आई विल क्विकली शो यू व्हाट ऑल आई गॉट. तो एक डब्बा मैं फेंक चुकी हूँ सैनिटाइज करके, एक ये वाला बचा है. आई विल क्विकली ओपन इट एंड शो यू कि मैंने क्या क्या खरीदा है. तो आई स्टार्ट विद स्किन केयर. सो द फर्स्ट थिंग आई गॉट फॉर माई स्किन केयर इज माई फेवरेट. लाइक यू ऑल नो, मैंने बहुत सारी वीडियोज में दिखाया है. Bio Morning Nectar Biotic का moisturizer. This moisturizer works wonders for my skin. Its original price was $199 and I got it for $139. This was the only thing I bought for my skincare क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ. I have a very acne prone skin, तो ज्यादा products skincare के change करती रहूँ तो और ज्यादा breakouts होते हैं. के लिए लाइक यू नो मैंने बहुत ही कम सामान मंगवाया था. लाइक एक मॉइस्चराइजर ही था. आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि व्हाट मॉइस्चराइजर आई यूज. नाउ फॉर माय आईज, आई जस्ट लव डूइंग माय आईज और मैंने बहुत ही ज्यादा मेकअप मंगवा लिया आईज के लिए. पता नहीं मुझे क्या हो गया था. आई जस्ट शो यू कि मैंने क्या क्या मंगवाया. दीज आर ऑल द थिंग्स आई बॉट. फर्स्ट थिंग आई गॉट फॉर माय आईज आर दीज लिक्विड लाइनर्स फ्रॉम Nykaa. It's in the shade Whimsical Potion and Dragon's Heart. I'll put everything in the description below. These liners are in the shade of blue and brown. It was originally priced at $299 but I got it for $224 and $194. Brown is very in क्योंकि 2000 का ट्रेंड वापस आ गया है. तो 2000 में सब लोग ही ब्राउन यूज करते थे, लाइक ब्राउन लिपस्टिक्स, ब्राउन लाइनर्स. सो अब brown is back in fashion. Second thing I got is this Maybelline Define and Blend brow pencil. So I usually use Wet n Wild but मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा वैसा ही है, तो I thought of purchasing this. I think it is very good product और बहुत reasonable भी था. Maybelline का है फिर भी इतना reasonable था and I think it's a good buy. If you are really looking for a good affordable brow pencil, you should definitely check this out. This one is in the shade grey brown and it was originally priced at $349. I got it for $260. Next thing we have for our eyes is a mascara. It's Maybelline Colossal. This one is waterproof. इसमें without waterproof भी आता है, तो you can also get that. I don't know, Nykaa पे मैंने इस बार बहुत सही चीजें ढूंढ ली थी and this one is good. No, it works really nice. The next thing I bought for my eyes is this Qued Shimmer Metallic Eyeshadow. It's in the shade Lilac Dreams. This one has a very good silver shade. It's originally priced at $495 but I think I got it on a pretty good price. I just got it for $248 and this looks lovely. Moving on to slightly महंगे products. You all know कितने महंगे होते हैं HUDA BEAUTY के palettes and we all cannot afford it. अगर आप बहुत ज़्यादा makeup enthusiast हो तो आप उसमें invest कर सकते हो, but for girls like me who के लिए बहुत ज़्यादा passionate नहीं होती है, I don't think we should invest in such luxury brands. मैं आपके लिए बहुत अच्छा product लाई हूँ जो अफोर्डेबल है एंड इट हैज ऑल द कलर्स ऑफ हुडा ब्यूटी. जो आजकल कलर्स चल रहा है Pinterest वाले, that you can use to create good eye looks. And the next product is from NK Makeup. It's their birthday cake palette and it has all these beautiful colors. मुझे ये कलर्स देखकर ही ना 90s के बर्थडेज की याद आ रही है क्योंकि इसमें पिंक है, पर्पल है, ऑरेंज है. इट इवन हैज येलो इन इट और येलो गाइज सब पैलेट्स में इजीली अवेलेबल नहीं होता. एंड इवन इफ यू लुक एट द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट गाइज, ये बहुत ज्यादा हुडा ब्यूटी के सिमिलर है. तो आई थिंक दिस वन इज अ गुड बाय एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल. These colors have good pigmentation and it was originally priced at $699 but I got it for $350. I bought this Makeup Revolution Creative Volume 1 palette recently and it's such a good purchase, you guys. You can see मेरी eyes अभी. I did this using this palette and it's amazing. It's so beautifully pigmented and it's very easy to use क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती blend करने के लिए. You just need to apply it nicely and it's done. This palette is all you need in your life. It has beautiful mix of colors ranging from matte to shimmer. Look at the pigmentation, guys. It's amazing. It was priced at $1,500 but I got it for $750. We are done with my eye products. Now let's quickly move on to our base. So I have bought a Forever 52 ka foundation which I accidentally delivered to my home. दूसरे वाले घर में, अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ, तो I will just show you how it looks like
here in the picture, but the application and the swatches I will show you on my Instagram stories, so you can follow me here on Pixie Rights and you will be able to see ki kaisa hai wo product. I also bought a loose powder from Forever 52, so I'll show you that as well Instagram stories pe. So if you're not following me on Instagram, you should definitely do that right away. Next up we have is a concealer from LA Girl. Well guys, if you're looking for a concealer which is affordable and gives you medium to high coverage and with an HD look, then this concealer is for you. I've been using this since I think 2019 now. मैंने अपनी शादी से पहले खरीदा था और 2019 की भी beginning में खरीदा था, तब से लेकर अब तक I've been using this and it's amazing. My shade in this is classic ivory and इसमें काफी अच्छी color range है, तो you can definitely check your skin tone and purchase it accordingly. Next we have is a primer. I have used Lakme का primer and I have used Faces का primer, but मुझे कोई और primer पसंद नहीं आ रहा है because मुझे लगता है मेरी skin ना वो oily कर देता है. This primer from Inside is a savior for me. It's gel based, it primes, protects and moisturizes, and it's also oil free. So for my girlfriends who have oily skin just like me, this one can be your savior, this can be your best friend. Also it's very affordable, so ye wala you can check out and buy. I'll put all the details and links in the description below, तो आप वहाँ से भी इसको easily खरीद सकते हो. The last and the final thing we have for today's haul is something for my lips. तो मैं lipsticks hoarder हूँ. I purchase lipsticks almost every month. मैंने बहुत मुश्किल से ये वाली आदत अपनी कंट्रोल करी है. मैं इतनी लिपस्टिक्स खरीदती थी कि मेरे पास कलेक्शन बढ़ते जाती थी, बट मैं लगाती वही 2-3 थी. I have these 2 lipsticks. One is from Nykaa. It's in the shade Walk the Walk and it's slightly pink. The packaging is not so good to be honest. मुझे लगा था कि मुझे ये थोड़ी better होगी. Nykaa की lipstick से पता नहीं, I always get very disappointed. Though the shade is nice and it's nice on my lips as well, but I think they could have done a little better with the packaging. The texture of this lipstick is creamy matte and the shade is amazing. I bought this lipstick for rupees 299. It didn't have any off. Next we have is a Royal Baby from L'Oreal. It's from their Free the Nude series and it's the shade No Judgment. Show you how it looks like. So this packaging is what I need in my life. It's such an amazing packaging and the color is even very good. It's a proper brown. जो पहले बचपन में सोचते थे ना मम्मियों वाला ब्राउन, ये वही वाला ब्राउन है and it's really good, proper coffee brown. You can see how L'Oreal is even engraved on this. This lipstick is a moist matte, so won't make your lips dry. It's a beautiful shade of brown which I purchased in just 488 rupees. It was originally priced for 799. That was it for my Nykaa haul. I hope you guys enjoyed it. अगर आपको कुछ भी पसंद हो तो please नीचे link click करना, देखना product and do let me know if you would want to see more such hauls in the future. I would love to do that. And yeah, if you're on this channel for the very first time, check out all my videos. Don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials, so follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat, and I'll see you guys in the next one. Bye.